Chronic stress का कुआ जाए, it is a long term and continuous stress that persists for a long period. कि बहुत अधिक दिन पर्यंत रहिबो ए स्ट्रेस टा, and it has a harmful effect on both physical health and mental well-being. Physical health और mental well-being पे affect करिवो. Although people may adapt to chronic stress to some extent, chronic stress पे some extent पर्यंत रहिबे, it continue to affect their coping ability and overall health. Coping अर्थ होची adjustment, माने मु स्ट्रेस टा को केमिति हैंडल करिवि. तो क्रोनिक स्ट्रेस जेतरा आसीबो अधिक रु अधिक दिन जेतरा स्ट्रेस टा कंटिन्यू करे ताको हमें क्रोनिक स्ट्रेस बोली कहबा. आ से क्रोनिक स्ट्रेस टा को हैंडल करिवा बहुत मुश्किल हेता है. And it continue to affect their coping ability, overall health. Effect of chronic stress causes physical illness এটা cause करिवो, and psychological distress, reduce a person coping ability. तो प्रथम जिनस होची causes physical illness देखैबो, reduces person coping ability, माने जो coping ability अछि ताको से reduce करिवो, increases the risk of heart disease ताको से increase करिवो, weakness the immune system by reducing natural killer cell activity, माने जोडा का हमर इम्यून सिस्टम थिबो जे कि बाहर जो वायरस अछि ताको अटैक करिवो, ताको से किल करिवो, increases likelihood of premature death को increase करिवो, affect overall physical and mental health को reduce करिवो. बुझला देखै एटा पर एटा लिखुछ तो ओके. मेजर सोर्सेस ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस केतले आसे ना चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज, एक्सपोजर टू द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर, बन्या हला किबा कि काको मर्डर कर देला सेबला आसीबो, रेप, मोलेस्टेशन एंड अडॉप्शन, रिस्की फैमिली एनवायरनमेंट जो झगड़ा जो सबरे हुए, लिविंग इन कांस्टेंट पॉवर्टी सबरे दरिद्र हिसाब रे रहिले से तो सेठी भी क्रोनिक स्ट्रेस आसीबो, बैड एंड स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप, ओके हस्बैंड वाइफ को भीतर झगड़ा कि घरे सबले जदि झगड़ा होतिबो तो स्ट्रेस आसे, हाई स्ट्रेस जॉब सबले काम रहउतिबो, कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन एंड अथॉरिटी बाय द अथॉरिटी फिगर्स, ह्यूमिलिएशन माने गाली देउथिबे जो बॉस माने थिबे चाकरी रे से गाली देउथिबे. देन मैरिटल रिलेशनशिप स्ट्रेस, छाड़पत्र जोटा हुए, झगड़ा हुए, केयरिंग न थांती, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तापर ये सब स्ट्रेस हैला परे जो सब विभिन्न प्रकार रोग बाहरे तेन ताको क्रोनिक स्ट्रेस बोली कहा जिवो. रिसर्च रे कोन आसिला, ब्राउन एंड हैरिस से फाइंड आउट कले पीपल कैन अडॉप्ट क्रोनिक स्ट्रेस ओनली ए सर्टेन एक्सटेंट बट कंटिन्यूअस स्ट्रेस वीकेंस द कोपिंग एबिलिटी. जो एडजस्ट करबा माने स्ट्रेस आसिले जो एडजस्टमेंट करा जाए से एडजस्टमेंट आस्ते आस्ते डिक्रीज हो जाए. आ जेतरा सेटा डिक्रीज हबो ऑटोमेटिक रोगग्रस्त हो जान. कि गोटे जदि एक्सपायर कर जाउछन जनकर धर हस्बैंड मरि जाउछन आ से पूरा एकुटिया कोन से पिला छुआ नाहंती तो से समय कहबो से पूरा स्ट्रेस रे रहंती, स्ट्रेस रे रही खाइबा पिबा छाड़ देन तापर से रोगग्रस्त होके मरि जानती. ओके. देन रेप्टी टेलर एंड सीमेंट, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस इन अर्ली लाइफ increase the risk of illness and in later life. प्रथमे रोग आसीबो तापरे बड़ बड़ प्रॉब्लम जो आसीबो, हार्ट डिजीज हेजिवो, नर्व काम करिवोनी, पैरालिसिस हवा, ए सब जिंस आ भितरे रहिता है. Pike et al, people with chronic stress show greater stress reaction and reduce immune function. तो स्ट्रेस जहा पाखरे अधिक रहिला इम्यून सिस्टम आउ काम करिवो नाही. रिनी, डंकेल, सेटर एंड वाडवा, सैंडमैन एमानकर रिसर्च रे कोन आसला, क्रोनिक स्ट्रेस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम, हेल्थ रो इशू सब बाहरिबो. बुझले तो ये होचे डिफरेंट रिसर्च रे माने सब डिफाइन करछन. तो क्रोनिक स्ट्रेस रो एक्चुअली कोन एटु से डिफाइन हैला देखो. The coping with stress. Coping is the process of dealing with or managing the internal and external demand of the life. तो गोटे सिचुएशन जेतरा आसीबो से सिचुएशन रे
मु केमिति निजको एडजस्ट करिवि कोपिंग करिवि बा से समयटा को एडजस्ट करिवा okay so Lazarus and Folkman coping help individual reduce the stress and adjust to the difficult situation the difficult situation को से handle करिवो definition coping refers to the effort made by the individual to manage coping refers to the effort made by the individual माने केमति हम निजुक निज एडजस्ट करिवा reduce overcome the stressful situation and their emotional impact feature of coping it is a conscious effort to deal with the stress को deal करिवा एटा जो conscious effort it help in manage environmental demand हिसाब रे रहिबो and internal pressures it can be action oriented and psychological it action oriented रहिबो it aims to reduce minimize the stress टा को minimize करिवो it varies from person to person टा vary करिवो okay it is a conscious effort to deal with the stress coping अर्थ होची adjustment manage the environmental demand situation जहाँ demand करूची से अनुसार हमें निजको परिवर्तन करिवा it can be action oriented okay it aims to reduce and minimize the stress टा को minimize करिवो it varies जो coping टा adjustment टा person to person हमारा different रहे हला देखो taking direct action to solve a problem direct action नबा focuses on changing the stressful situation को हमें focus करिवा intrapsychic coping involve changing one thought feeling and attitude जनकर feeling attitude को ये changes करिवो help control emotion and reduce mental stress को reduce करिवो तो को फैक्टर अफेक्टिंग करिवो कोपिंग को पास्ट एक्सपीरियंस प्रीवियस एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस हाउ टू कोप अप विथ द स्ट्रेस ना आगुरु मु केमति से स्ट्रेस टा को हैंडल करिछि ताको रहिबो पर्सनालिटी ट्रेड आवर पर्सनालिटी ट्रेड अफेक्ट द वे वी डील विथ द स्ट्रेस देन प्रीवियस सक्सेस एंड फेल्युअर जो कोपिंग टा जोटा रहिछि ताले पास्ट सक्सेस और फेल्युअर और हैंडलिंग द स्ट्रेस अफेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंट पीपल डिफर इन देयर कोपिंग स्टाइल एंड एबिलिटी psychological appraisal how we think and evaluate the situation affect coping situation टा को केमती हमें हैंडल करियो बुझियो जे तो सेटा डिपेंड करिवो ओटा टाइप्स ऑफ कोपिंग में बुझि पारे ना बुझि रानी ओके देखो role of individual different people react differently to the same stressful जेतरा में स्ट्रेस पड़थले different लोक different stress को हैंडल करिवे different life experience personality pattern is different way of thinking and evaluating situation समस्त different way रे से चिंता करिवे situation most likely to cause stress कौन stress आसीबो negative unpredictable जोटा चिंता न करथियो सेटा आसीबो uncontrollable ambiguous overwhelming then threatening to life सब गाड़ी बंद ये सब जल्दी सुनतो बुझला देखो पढ़ियो तो ए खा आवसी एटा पढ़ि देछि ना the relationship between stress and coping और stress भीतर कौन relationship रहिबो गोटेला dynamic relationship the relationship between stress event and coping is dynamic माने situation हिसाब रे हमें ताको एडजस्ट करबा को चेष्टा करो बुझलो यदि तुम दी जण सांग थिबो कि चुटी टाइम देला चलिबो एटा जो coping strategy अननोन थियो ठाई किना बगेबो बुझला continuous interaction coping involve continuous interaction between the individual internal resources
एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक इंटरनल रिसोर्सेज इमोशन एबिलिटी आ ऊपर देखा जीवो एक्सटर्नल रिसोर्सेज फैमिली फ्रेंड एनवायरनमेंट एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन रे आसीबो ongoing process of coping is not one time effort माने संग संगे स्ट्रेस आसला मो ताको एडजस्ट कर देबी एटा वन टाइम एफर्ट नो एटा कंटीन्यूअस प्रोसेस रे हम एको हैंडल करिवा ओके देन इट इज द सीरीज ऑफ रेस्पॉन्सेस दैट डेवलप ओवर द टाइम एज रेस्पॉन्स एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर तो जेंति रहला स्ट्रेसफुल इवेंट एक्सेस प्लान टेक एक्शन इवैल्यूएट एंड एडजस्ट इवैल्यूएट और एडजस्ट हम करि परिबा depends upon the available resources. The effective of coping depends upon the resources available to a person at a particular time. What a particular time रे आमे coping टारी करूचे better resources usually lead to the better coping. माने जो हिसाब रे मते resources available रहिबो से हिसाब रे मो adjustment टा भी मते से वाला रहिबो जेंति कि रहला हॉस्टल खाइबा ना एटा बढ़िया खाइबा मु इंस्पायर करबी एवला खाइबा मिले आपको अलग जगह एमते खाइबा नाही आपको भाभी ना भल खाए तमे इंस्पायर ही खाइ दो बुझिला किदा कोन हॉस्टल खाइबा जदी रोसई खाइबा बढिया हो तमे बे एडमिट हेइ सरंतनी कोठी आड हॉस्पिटल जदी में मची छी भल नहीं भल दोची तो खाइबा ना खराब दोची नो रिएक्शन माने खाइबाटा कथा मु जेतले जाहा पचार से नो रिएक्शन थाए आ एमती एमती हसम थाए मु बुझी जाए खाइबाटा अति सुंदर थाए कोपिंग स्ट्रेटजी एडजस्ट करे पड़ियो ओके देखो से कोपिंग टा केमती करो तमर जो खाइबाटा अबाग्या था ताको कोपिंग केमती करो बस दैट इज ए कोपिंग स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन जदि आज संतुला खाइबा को दिया जाइए ताले आचार फाचार रहियो नहले जदि आज टोटली डालमा दिया जाइए ताले रोसई पाखु जीवा गोटे बिरियानी किनिबा तीन जन डिवाइड करी खाइबा क्वार्टर 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 है नहीं ओके तुम सब फंडामेंटल मु जानि ओके लेखो एटा सेटा सरी जाइए ना हां ठीक अछि तो नेक्स्ट क्लास रे आगु पढिबा